Shrutiji, Mr. Shalil Gupta, Business Head. All respectable dear friends, today's subject is very important for our country. Our basic problem is our import for fossil fuel is now coming to 16 lakh crores. And this is not only economic challenge, but as far as the air pollution is concerned, this is also a big challenge. In the country, we have 35% of the pollution, it is because of the fossil fuel. At the same time, because of this, the economic challenge is there. When we have import of 18 lakh crores, 16 lakh crore, you understand what is to be impact on our economy. And that is the reason that important thing which is very important for all of us, that is air pollution. And the people from Delhi, they already understand what is the problem they are facing because of air pollution. A lot of PIL up to the Supreme Court. And as a road minister, I am working on the scheme making of road of 60,000 crore near Delhi area. And out of which many roads have already started. But still there is a big problem. If we can make the road and if diesel and petrol we are using, again it will be a great problem to create pollution. So the policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. And for that reason, your Indian automobile industry is very important. Presently, the turnover of this industry is 7.5 lakh crores, out of which 3.5 lakh crore is our export. The Bajaj, Hero, TVS, they are exporting 50% of their production of two-wheelers. And today, overall contribution of this sector in GDP is 7.1%. And manufacturing GDP contribution is 49%. And this is the sector which create 4.5 crore jobs in the country. All big giants, all big brands in the whole world now present in India. And that is the reason that this sector is very important, not only for economy, but for creating employment potential. This is really an important sector. As a minister, my dream is to make this sector of 15 lakh crore within 5 years. And I am confident that we will be succeeding it. Because presently, all majority, 99% of the big reputed automobile brands, they are manufacturing centers in India. And first of all, it is the time the automobile sector is the growth engine for the country. But at the same time, we need to take the preventive measures as far as the ecology and environment is concerned. And for that reason, our planning is going for alternative fuel. Now, from last many days, from 2004, I am talking about alternative fuels. But whenever you have any out-of-box idea, it is really difficult to people to believe on that ideas, because generally people are not convinced by it. First of all, our agriculture sector is a big problem. Once upon a time we have shortage of food grain, and presently we have surplus of food grain. Rice surplus, wheat surplus, corn surplus, sugar surplus. And for that reason now we need to change our crop pattern. In the global economy, it is also a big challenge for our rural and agriculture sector that we are not in position to give them appropriate price. And that's the reason that we have taken the policy that diversification of agriculture towards energy and power sector. Only I can give the example of sugar. Our requirement for sugar is 280 lakh ton per year. And the last year our production was 340 lakh ton. And the previously stock was 80 lakh ton.
The present year, it one of the good fortune for the company, sugar factories, the people and the farmers, everybody, that drought in Brazil becoming a big strength for all of us, and we have a lot of sugar export. So that's the reason that we have decided now the ethanol is the alternative fuel, it's a green fuel. We can make ethanol from molasses, sea molasses. 1 ton of sugarcane is giving 4% of molasses, that is called as sea molasses. Then we are adding 3% of sugar more in molasses, that is called as BAB molasses. So from that molasses we are making ethanol. Then we have started to making ethanol from sugarcane juice. Now we are making ethanol from broken rice, wheat and food grains, corn. And now this is one of the things which is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous, and 100% is going to helpful for the agriculture sector. So now in Brazil, Canada and USA, they have got flex engine. Probably you know that there is one model from Toyota named as Camry. The model was hybrid. It was working on 100% petrol and create 40% electricity. And that Camry model now Toyota is going to launch their cars where there will be, because of flex engine, it will be 100% bioethanol, and the same factor, the petrol rate will come up to 35 to 40 rupees per liter as per the average is concerned. Now the problem was that the caloric value of ethanol was not equal to petrol. So once I have just got the information from Russia that they have got the technology available where the caloric value of petrol and ethanol is same. So because of this green fuel, which I have too much interest in it, I just called the scientists from Russia. We have a long discussion, take the presentation, and after that I request Puriji, Petroleum Minister, the Chairman of Indian Oil, Mr. Vaidya, and Ram Kumar from Indian Oil Research Laboratory from Faridabad. In my house, the Russian scientists give the presentation, and after the meeting, the Ram Kumar ji and Vaidya ji was telling to me, sir, this is a fantastic idea, but we feel it is very difficult. तो मैंने हिंदी में उनको कहा कि ऐसा करो, गाजर की पुंगी है, मैंने बुलाया उनको, आप सुनो, प्रयोग कर लो, फायदा होगा तो आगे जाओ, नहीं तो छोड़ दो. तो 3 महीने प्रयोग हुआ, और आफ्टर दैट इंडियन ऑयल डायरेक्टर मिस्टर राम कुमार कम टू कंक्लूजन कैट यस, ये हो सकता है. अब उन्होंने उसको स्वीकार किया है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी स्वीकार किया है, जिसके कारण पेट्रोल की एवरेज जितनी है उतनी इथेनॉल की मिलेगी. और अभी बजाज, टीवीएस और हीरो की मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पर तैयार है, ऑटो रिक्शा तैयार है, और उत्तर प्रदेश में इथेनॉल बनता है, तमिलनाडु में बनता है. हम हर जगह पर इथेनॉल का यूज कर सकते हैं पेट्रोल के अलावा, और पेट्रोल के पंप खुल रहे हैं. पूना में 3 पंप खुल गए हैं. मैंने तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में स्कैनिया की बसेस पूरी इथेनॉल पर 35 चल रही थी. सो इथेनॉल कैन बी ए गुड फ्यूल और ग्रीन फ्यूल जो फ्लेक्स इंजन में आएगा. तो धीरे धीरे देश में मैं ये कहता हूँ कि 5 साल के बाद अगर ये इथेनॉल के पंप आएंगे और पेट्रोल के बजाय इथेनॉल अल्टरनेटिव होगा, पेट्रोल का भाव है 120 रुपये, इथेनॉल का है 62 रुपीज़, आधे प्राइस में वही कैलोरिक वैल्यू का ग्रीन फ्यूल मिलेगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पेट्रोल का यूज़ करने की. तो इथेनॉल इज ए ग्रीन फ्यूल, एंड ऑलरेडी we are making ethanol, second generation ethanol from bamboo, from biomass. The Indian Oil has established one plant in Panipat, it's in process. They are making 1 lakh liter ethanol per day from parali, rice straw, and 150 ton biobitumen. And I just assure them that you can make it, because presently for the road sector, we need 75 lakh ton of bitumen, out of which 50 lakh ton bitumen is we are already making in India, and 25 lakh ton of bitumen we are importing. So using this parali, it's a hazardous material which you are facing the problem of pollution. We can make at least 10 to 20 big industry here and making ethanol from that. We can use biotechnology, increasing biomass,
and we can use that biomass for making of biobitumen, bioethanol. Now this ethanol is 95.5%, which 10% we are adding in petrol. The idea is now we have decided to add 20% in petrol, and we can 100% use in place of petrol now. It's also the all rules and regulations are already finalized. And if we can make the ethanol of 99.5% purity, that is to be aviation fuel. Already at 10 September, one of the leading company is taking one flight in adding this bio-aviation fuel. I remember 3 years before, we have fighter jet and helicopter from Air Force on 100% biofuel. We have just taken one flight from Dehradun to Delhi of SpiceJet using 50% biofuel. So even presently the aviation industry is facing crucial problem because of the rate which already increased of aviation fuel. That is a big problem for all the companies. The 75% of their cost is now going to use this cost of this aviation fuel. Here we can make it bioethanol and aviation fuel. It is in the process. We are expecting as early as possible. Already Brazil is successfully implementing that. I remember when I meet with the minister, the jet Embril, the Embril jet company is using 100% bio-aviation fuel successfully. They have the standards. So this is the time that we need to have developed alternative fuel technology in the country. Even in a generator set, we are using 4,000 crore liters. And because of my constant persuasion and request, the Kirloskar has now prepared the generator set, which is on 100% bioethanol, is with me. I have already converted my own tractor on bio-CNG and bio-LNG. It is on bio-CNG, and we can get 1 ton of bio-CNG or bio-LNG from 5 ton of Parli, rice straw. It is already there. In Assam, they are making ethanol from bamboo. And Karnataka, we have got the Bhima bamboo, is giving after 2 years 200 ton of bamboo per acre. So it is to be a great thing for the farmer. Even the westland area, we can make the plantation of this bamboo, and we can make huge quantity of ethanol. It can be possible. The most important thing is why we are facing crucial crisis as far as our economy is concerned, because we need to increase our export. The problem is that totally, presently, we have 92% of pollution is because of road percent, that is 303 million tons of CO2. Waterways 3%, that is 10 million tons of CO2. Airways 3%, that is 10 million tons of CO2. And railway, that is 2%, 7 million tons of CO2. Not only pollution, but for example, going by railway, the cost is, going by road is 10 rupees, going by railway is 6 rupees, and going by waterways is only 1 rupees. The logistic cost in our country is 16 to 18%. And the logistic cost in China, it is 8 to 10%. And the European country, the logistic cost is 12%. And the USA, it is 12 to 13%. And because of the logistic cost, our cost of transportation is very high. That is the reason we are not very much competitive in international market in our export. If we reduce the cost from 16% to 10%, by 6% of reducing the logistic cost, we can make our exports at least 1.5 times more. We will be more competitive. We are making roads now. Delhi to Mumbai, we are making express highway. Presently, it takes truck from Delhi to Mumbai 52 hours. And at the end of this year, we can take it from 20 hours. We are making road from Delhi to Dehradun 2 hours for car. Delhi to Haridwar 2 hours. Delhi to Chandigarh 2.5 hours. Delhi to Jaipur 2 hours. Delhi to Amritsar 4 hours. Delhi to Katra 6 hours. Delhi to Srinagar 8 hours. And Delhi to Mumbai 12 hours. Though I am a politician, please believe me that you just take the example of Delhi Meerut highway. Previously it was 4.5 hours from Meerut to Delhi.
and now it is 45 minutes, 40 minutes from Meerut to Delhi, and the people are telling me they are coming to Connaught Place for ice cream parlor from Meerut to Delhi, and many of the people from Meerut, actually they have their houses in Delhi, they are now shifted to Meerut. So this is going to happen. It is really important for the country. So my suggestion is, we need import substitute, cost effective, pollution free, indigenous, and supporting to the particularly our farm sector, agriculture is very important. And for that reason, we are now diverting our economy toward gas economy. The LNG is the fuel for the future. If you are doing the buses particularly, if we are using 100 rupees diesel for the bus, for LNG it is only 40 rupees fuel cost. For CNG it is 50 rupees cost, and for electric it is only 10 rupees cost. Now we have decided to purchase 50,000 electric buses. I am just giving you the example of London transport. My request to Honorable Chief Editor that you should something write on this London transport model. This model is, there are 7 operators are there. The color of the bus is same. The uniform of the driver and conductor is same. It is private, and they are giving actually for best bus in Mumbai, the cost per kilometer is 115 rupees per kilometer. And air conditioned bus, the cost is 41 rupees per kilometer now, the same capacity. And for without air condition, it is 38 rupees. This is the official rate received by the government. So the idea is the private operator will purchase the bus, and corporation will make the contract for 225 kilometer per day by 41 or 38, and electric bus future is very bright. Even our corporations and state government can reduce their ticket rate by 25 to 30% and giving air conditioned facility to the passenger. It can be possible. अभी तो हमारे राज्य सरकार के मैं ही मंत्री हूँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कारपोरेशन की हालत ऐसी है कि हॉर्न छोड़कर सब बजता है उस बस में, ऐसी स्थिति है. So by using the public-private investment in it, now government is planning for purchasing of 50,000 electric buses. So ultimately the mobility, electric mobility is obvious. It is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. The problem is with the lithium ion battery. And now the chemistry is now in India, our startup, our engineering intelligent manpower is very, very capable. So now we are already working on zinc, sodium ion, the sodium ion, zinc ion, aluminum ion. And at the same time now successfully the new technology is already is invented by Indian Oil Corporation Laboratory, Research Laboratory, Faridabad, that is aluminum air technology. So it is very cheaper. So day by day the cost of the electrical vehicle is going to reduce, and within 2 years the cost of electric vehicle and the petrol vehicle will be same. I am giving you the example when I was started in the hotel, lot of people, where there will be charging, when the car stop, how they can charge, what, no one was positive about it. Today there is a waiting list for Tata and Mahindra e-vehicles. People are coming to me that give your recommendation letter by which we will get the car as early as possible. So everyone is purchasing because the spending 15,000 rupees on petrol and 2,000 rupees on electricity, it's a saving. I have electric car. In Nagpur I am using electric car. Now I have car, green hydrogen, not is a hydrogen car. Hydrogen is the fuel for the future. And for mobility, it is obvious for the country, for the all world also, it is on the line to accept hydrogen as a fuel. If the hydrogen from petroleum, that is called as brown hydrogen. If it is from coal, we can take it as black hydrogen. And from water and biomass and organic waste, and we can make the hydrogen that is called as green hydrogen. The all sewage water is there. Lot of projects, the water is available free of charge. And rooftop, the 70% of the cost in green hydrogen is power. So by solar rooftop, the power will be available. So my dream is to have the cost of green hydrogen 77 rupees per kg, $1 per kg.
and it gives 450 kilometer average. Just 5 minutes from this hotel, my residence is here. I got the hydrogen car, but presently we don't have green hydrogen available. There is some problem in Faridabad. After 10 days, we will get the hydrogen, and I am also, you can enjoy what type of quality. The name of the car is Mirai. In Japani, the Mirai means Bhavishya, future. So hydrogen is the fuel for the future. The electric, hydrogen, ethanol is the alternative fuel. In Assam, we have 100 ton of methanol available, and the government has already taken decision to mixing of 15% methanol in diesel. Methanol is from coal. The low quality coal, we can get methanol, urea, ammonium nitrate, and DME. DME is a gas. And the USA, they are adding 20% DME in LPG, and that is going to reduce the cost of LPG cylinder by 20%. So the methanol, ethanol, biodiesel, bio-CNG, bio-LNG, and even from plastic. We have a lot of industry in the country now from the waste plastic. We can make this, we will not call it as a petrol, but what we call it, what Subbarao, what we call it? It is in place of diesel we can use it, which is available with 45 rupees per liter. So this is, the technology is available. So we can convert the waste plastic into crude petrol. So my suggestion is all options are open. And lastly, which I want to tell you about is that the future is for mobile, for ropeway, cable car and funicular railway. In my own department now, Parvatmala project is already started. We have already sanctioned 65 ropeways and cable car. My idea is to taking from Dhaula Kuwa. I always remember Dhaula Kuwa. I don't know much about Delhi, but when I was newly coming to Delhi, every time there was traffic jam in Dhaula Kuwa. So I decided to solve this problem. It was very difficult. I take the land from the Defense Ministry, and now Dhaula Kuwa is clear. Still some small problems are there. So my idea is now taking a bus, double-decker bus, from Dhaula Kuwa to Gurgaon up to Manesar, and going up to that end of Sona, where we connect Delhi-Mumbai Express Highway. And already the two companies in the world, one is Doppelmayr and Puma, they have in Philippines, they have double-decker bus in the air. So this can be possible. So today, mobility on electricity is the future for the country. And we are now in our power basket, our 40% of the power is solar power. We need to increase more power, and our target is make it up to 60%. So by which the power is cost is very low. We are making hydropower, and 100% I am confident that power is the future fuel for the transport. Also I am planning for starting trolley bus, that double bus, which is on the cable. My idea, it's not my declaration, but I am working on that. I want to make Delhi-Mumbai Express Highway e-highway and take electric bus from Delhi to Jaipur. The first pilot project, we are working on it. We have discussion with the companies, and I am confident that we will succeed in this mission, but it will take some time. One of the reputed automobile company has given me the invitation for starting of double-decker electric bus in Mumbai. So even one company is asking my time for launching of electric truck of 40-ton capacity. And now also I am requesting the construction equipment manufacturing company to, in place of diesel, they should go for LNG, CNG, biodiesel, ethanol, methanol and electric. The JCP has successfully their JCP, they make that about 40% diesel and 50% CNG. And I have got effort to launch that. And now they received the order, big order from Russia for that. So this is the future. So the future of mobility is on electricity, ethanol, at the same time methanol, biodiesel, bio-LNG, bio-CNG and green hydrogen. And these are the alternative fuels, which is the future. And I feel that the most important concern is ecology and environment. Three important is ethics, economy, ecology and environment.
And for the ecology and environment, it's the time for the country that we need to reduce our import, particularly the fossil fuel, and take all our mobility on the alternative fuel, and we have to develop the agriculture sector. This is our vision for development of mobility, public transport in India on the basis of electricity. And things are changing, people are now believing, and lot of things are moving. I am confident within 2 years, you will see a successful picture of all these dreams, and 100% my ministry is trying our level best to make it as early as possible. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir, for inspiring words. I request you to please stay back. You are a great example of how people's representative can work for the development of the country. Ladies and gentlemen, now we have fireside chat session. Joining us, we have with us Mr. Srutijit KK, Editor-in-Chief, Mint. Thank you so much, sir, for joining us. Can we have a big round of applause for the dignitaries on the dais? Thank you so much, ladies and gentlemen. Firstly, I should say that it didn't feel like we were listening to a minister or a politician. It felt like we were listening to a technologist. Thank you so much for joining us today and giving us that, tour through the coming technology landscape. I should also say that personally, I'm so heartened to have Gadkari ji with us here for Mint Mobility Summit. I cannot think of anybody who has done more for mobility in India, both in terms of setting the vision as well as embodying the qualities required to get large and complex projects executed, push through the challenges in the government where multiple agencies, multiple center and state are involved. We are all familiar with the complexities. So, personally, very, very delighted to have you with us here, Gadkari ji, and thank you so much for finding the time. Firstly, I wanted to ask you, I found it very interesting that you said that you have a hydrogen car, you have a genset now that works on green fuel, you have a tractor, और क्या-क्या applications है आपका personal इसमें आप इस्तेमाल करते हैं green fuel का? Sir, ऐसा कि it's my passion. I'm not a businessman, neither other thing, but I'm from Vidarbha, and we have 10,000 farmer societies. And I was inspired that I should do something in my life for the farmers. Then we have taken 3 sugar factories. A lot of things, but it's totally sugar business is the worst business. We are losing 30 crore per year. So we have started ethanol. And for that green dream, first of all, my problem is when I discussing the thing with my wife also, she was asking me, कि आप बोलते हैं पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, फिर गाड़ी चलेगी. अब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता आपके ऊपर, तो लोगों का क्या बैठे. तब मैंने सोचा कि ये first you should have every proven technology with you. Today any journalist can ask me anything about it. I have 101% proven technology and experiments with me. And that is the reason I am confident I can give you this. Now today I have just have a presentation from one of the sugar mill. There is a spent wash, it's a hazardous material, and they are making hydrogen from spent wash. So I feel that I have got tractor on CNG. I have got my all cars on electric. We have 5 cars on electric in my house. Then scooter, one of the start. Now we have 250 young talented engineers started scooters, manufacturing scooter. You can't imagine the quality of the scooter is. And our scooter industry, the 50% of the production we are making export of it. Now the auto rickshaw, cart, that e-cart. So there is a huge potential. And it's a success story because as compared with the petroleum fuel, the electric is so cheaper. I am asking you as a journalist, you have got petrol car. Your cost may be 20,000 rupees per month for petrol. If you can take a luxury car, your expenditure on fuel will be 2,000 rupees. At night at your own home, you can charge the thing. Now the average rate of scooter, they are running. The 2 companies that make the survey for that, study for that. And it is one company, TVS was telling it is 24 kilometers per day.
and Bajaj was telling to 26 kilometer per day. So the new startup started to making scooter, and now this big brand, they have this electric scooter having capacity of 120 kilometer charge. Now they are making scooter of 50 kilometer and 40 kilometer by reducing cost. The electric scooter cost is 50,000, 60,000, 65,000. So anyone poor person can take the scooter and he can use it. So that is the reason that 250 startup has already started of making of two-wheeler. So these are the practical experiences there, and I feel that now there is no need to market the idea. Now people are convinced they want to purchase alternative fuel, and the pollution, it's really a big problem. That's the reason we need to adopt this policy. And I'm agriculture, actually my profession is agriculture. So my really big problem in the country is how we can make survival of our farmers. And मैं उनको कहता हूँ अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनो. आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, अपने एक रूफटॉप में लगाओ सोलर, एक कुएं में पानी तुम्हारे यहाँ है, इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ का है, और वो जनरेटर सेट मिल जाएगा 1.5 करोड़ का. अपने यहाँ रोड पर अपना पंप डाल दो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, बसेस बन रही, ट्रक बन रही, फैक्ट्री में जाएगा, हवाई जहाज में जाएगा, रेलवे में जाएगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला किसान तैयार हो, इथेनॉल तैयार करने वाला किसान तैयार हो, तो हमारी इकोनॉमी बदल जाएगी. ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का 12% है, वो 20% के ऊपर चला जाएगा. तो दैट इज टू बी नाउ. अभी तो सब सक्सेसफुल हो गया, मैं भी ये करते रहता हूँ एज ए पैशन. Gadkari ji, one of the things that you said that struck me the most as interesting is that ethanol at a certain level of purity can replace aviation fuel. Can you talk a little bit about that? Yes, already actually the research is going on. One of the company, Praj from Pune, they have successfully have a technology making from sugar cane juice, they can make aviation fuel. The aviation fuel we need, now it is alcohol, 90.5% grade alcohol. First of all, we are making rectified spirit. There are 2 lines. One line which is going for ethanol, and other line is going for ENA, means foreign liquor. So the same time, the third line will be there, where we can make 99.5% of purity of ethanol, that is to be aviation fuel. And now the experiment is already going on. Indian Oil is now thinking to establish one pilot project somewhere in India, and it is not a now big problem. In Brazil, they have successfully doing it, and in due course of time, we will have the technology, and we will have our indigenous green fuel for aviation. Amazing. Road safety is one of the themes that is very close to your heart. You have yourself pushed several initiatives, such as the 3-point seat belt for the rear passengers in the middle, 6 airbags for cars carrying a certain number of people, NCAP, Bharat NCAP crash tests. What else are you thinking about, number one? And number two, the initiatives जो आपने announce किया गया है, ये सब, are you happy with the implementation and the speed? Actually, frankly speaking, this is the only dark area in my ministry. Every year we have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. And in deaths, 18 to 24 years, 60% of the young talented people are there. Unfortunately, we are already improving the black spots. We are taking lot of decisions regarding automobile. There are 4 more important stakes are there. One is education, engineering, emergency. Everywhere we are taking lot of decisions. In Tamil Nadu, the government with the cooperation of World Bank successfully implemented the program by which they reduced the number of accidents by 50% and death by 50%. Now in Bangalore, we have a big conference of transport ministers, and we are trying our level best to, we have new motor vehicle act. We are taking a lot of efforts, but still, as far as the road accident statistics is concerned, it is as long as same. And it's not a good thing. We are trying, but the problem is that there is lot of things where we need cooperation from the people by and large. Actually, हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और भय भी नहीं. तो कोई भी आपने रोड पे
अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं, कहीं भी घुस जाती स्कूटर, कहीं भी गाड़ी डाल देते हैं, तो एक्सीडेंट्स होते हैं. Somewhere we need even cooperation from media for road safety. We are trying hard, but the truth is we are at the same mark. No that much improvement. We are highest in the world. And before my mission is to 50% deaths and accidents, we want to reduce before end of 24. I don't know, but now we have a program with the World Bank and ADB of 14,000 crore. We are improving black spots. We are taking lot of decisions with automobile engineering. Regarding the rules and regulation, we are already taken lot of decisions. Still, road safety is the highest priority for all of us. We are doing the things, but as far as the results and statistic which is available, still we have to do more for that. That is the need of the world. Very sobering statistics indeed. Your ministry had raised penalties in the hope that that will encourage better driving. I think some states did not agree. Did that dissuade bad driving to an extent or not really? Actually, this is the subject in concurrent list. Now we have new Motor Vehicle Act. But there is a problem because the 50% the subjects are with the central government and 50% subject are with the state government. We have taken a lot of decisions, but we need the cooperation from the state government for improvement of this sector. So we have the meeting in Bangalore now. So we will discuss all the subjects. We will try our level best to make unanimity in all the policies which we are making for the future, for the interest of the country and the society. And I feel that we will get the cooperation from the people and we will be in position to save the life of the people. You've said that you will try to build 50 kilometers of highways a day. You will hit that kind of cadence. Last year, of course, had slowed down because of COVID. This year also, the speed is picking up. Two things I want to know. One is, how many kilometers will realistically get built this year? Number two is climate change slowing things down? More frequent floods, erratic monsoons, heat waves. Is that also slowing down the building of roads? First of all, we are facing crucial problem because of this monsoon. Now the bitumen roads, everywhere we are facing the problem. So I always thinking on the line. So I just given one solution to the engineers that we can make 6-inch white topping on bitumen road and after that making 2-inch bitumen surfacing. So by which without cement, without concrete road, we don't have option. Once a time I started to make all concrete road, but my experience was bad. The cement industry's cartelization creates problem. They increase the rate because the maximum cement was purchased by NHI for road construction. So because of that situation, I changed my mind. But now we are planning to make 6-inch white topping. It is a new technology developed by one engineer in Ultratech. And in my engineer in? Ultratech company. Ultratech company. His engineer is now retired. Now I am requesting him to appoint in my expert committee also. And we want to make it this all road concrete. You come to Nagpur. Everywhere there is a cement concrete road. You see, you can enjoy. Because from last 20 years, when I was minister in state government in Mumbai, I constructed 55 flyovers, Worli-Bandra, Mumbai-Pune Express Highway. There is not a single pothole in Mumbai-Pune Express Highway. Still the rains are there. In Mumbai-Goa 4-laning, we are making all concrete roads. So bitumen roads is a problem and there are problems we are facing. But when we decided to make concrete road, the cement people, the steel people, they increase the rate. So my idea is to always create the alternative. To create the alternative for all the material is very important. Otherwise, when we take cement, cement people will take the advantage. We increase the volume of steel, they increase the value. Now we are allowing fiberglass steel. Even we are allowing different technology of alternative for cement. And now I am telling you one of the big things which successfully we are making. There is a big saving. Now distance between two pier in metro and flyover is 30 meter. But in Malaysia they invented a technology. Now this distance between two pier is 120 meter. So 3 pier don't need for that. So cost 40% cost is saving. By which the beam which is precast, that is with the steel fiber.
So that way we can save. Now we are making double-decker flyover. In Nagpur, we have got the flyover, ground level highway, 6 lane, 8 lane, then 6 lane flyover, and then metro. Now we are making in Chennai and Pune, and ground level 8 lane road, 6 lane flyover, then 6 lane flyover, then metro. So even because of problem, just 2 days before I was stuck up in this Gurgaon road, many of the people are every time facing the problem. I called my all engineers, your design was wrong. And from Dholakua, you make the flyover till to Gurgaon. And that make the double road, 8 lane road, otherwise you see, really a big problem. So my idea is to take it up to I don't know the too much about Gurgaon and Delhi, but that Sona road. The idea was there is a breakup. No, it's not. Within 2 years we have to make the complete flyover, double decker. In Chennai, we are making from Chennai port to out of Chennai 3-layer flyover. In Pune to Ahmednagar, where from Shirur to Wagoli, we are making double-decker flyover. So now you have to change the time. Now it's a time you have to take the advantage of the technology and you have to think for 50 years. I always telling to the people that you can donate eye, but you cannot donate vision. The lack of vision is a big problem, and particularly the planning authority, the engineers, and we people, we need to think for 50 years. Presently the system is we only think for immediate, whatever the solution we will do it, that is the problem. So 100% we are using new technology, new innovations, new research. And I always telling to people 2 philosophies. One is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled, and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And the other philosophy is no one is best. No material is best. It is depending upon the vision of the leadership. It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. We can use plastic, we can use waste rubber. Now we are allowing the waste tire from whole the world coming to India and taking that rubber powder, and we are using to make rubberized bitumen, using in the road or using that rubber powder in that. So everywhere there is a technology. We are already using 10% of plastic in the bitumen. So these are the new technology where we need to take the advantage of it. We have to protect the environment. The last thing which I will tell you, for this year, we are now making plantation of trees. So I insisted, no, there will be no cutting tree. The Supreme Court has given us permission in Char Dham. We said, no, you make the transplantation. In this Dwarka Express Highway, just in Gurgaon, we have successfully transplanted 12,000 trees. And now we are making e-tag. And this year, we are decided to plant 5 crore trees. And we are purchasing trees of 3 meter height from Rajasamudri. Which district of Andhra Pradesh? Rajmundry. So now the tree is not available there. And we have purchased 75 lakh trees of 3 meter. And cost is 80 rupees per tree. And within a month, I will give you e-tag open policy for all. From your site, you can go and you can see e-tag number of every tree on highway. And now we want to make green express highway. And we are selecting special species like pimple, word, don't know the English name of that, but they are taking more carbon dioxide. So pollution is a big concern where our planning is for that, and we are doing and taking all new initiative for that. So let's talk about EVs. Recently, there has of course been a lot of concern around fire in some of the EV vehicles. 2 reports have been submitted to your ministry, one on EV safety and another on EV standards. Is there anything you can share with us about what the recommendations have been or what the government intends to do? First, the official answer is, up till now I don't have the report. My ministry has received the report. But one thing I will tell you, if the mistakes are bona fide, forgive them. If the mistakes are mala fide, sack them. अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नए प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने स्टैंडर्ड्स भी तय कर दिए हैं. अब एक आधी घटना नहीं होनी चाहिए, गलत है वो, उसमें कोई निग्लिजेंस है, कोई उसको रेक्टिफाई करेंगे. कुछ जगह हमने उनको रिकॉल करने के लिए भी कहा है. हम कोई उनके प्रति लिबरल नहीं है.
पर आप एक ब्रांड को एक आग लग गई, बड़ी बड़ी न्यूज 6-6 कॉलम की छपवा देते हो, बेचारे खत्म हो जाएंगे। नया है, नई शुरुआत होती है तो अड़चने आती है, समस्या आती है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। एकदम उसको एक्सट्रीम स्टेज पर नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रिवेंटिव मेजर्स कोई लेना नहीं चाहिए। आई एम कॉशियस एंड सेंसिटिव अबाउट इट। रिपोर्ट आए हैं, मैं सोच समझ के निर्णय करूंगा, पर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि these are the technical problem, new technology is there, people are making new experiments, people are taking new chemistry, उसके साथ उसके स्टैंडर्ड्स अभी तक हुए नहीं है, वर्ल्ड में नहीं हुए थे, वो हमने लाए हैं, अब स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। उसके बाद कोई मैलाफाइड इंटेंशंस कुछ करता है तो जरूर कार्रवाई करेंगे, पर जो रास्ते पे चलेगा उसका एक्सीडेंट हुआ इसका मतलब रास्ते पे चलना बंद कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके हम जरूर आगे जाएंगे। अभी मैं ऑफिशियल जवाब इतना ही दूंगा कि अब मुझे कोई रिपोर्ट मिला नहीं। But are you, let me ask you this, are you happy with the way the industry and EV companies have responded in the wake of your interventions and directions? Yes, yes. They have taken the decision, they recall the vehicles, and we have taken a lot of serious things. We have a very hot discussion with them. We are not very much liberal about it. We are very much sensitive about the life of the people. But at the same time, you should understand this is the new technology, new innovations, new research. Even world don't have the all standards. There are chemistry changing from lithium ion to aluminum ion, sodium ion, different type. Now we are going for aluminum technology. So new experiments are there. We need some time to rectify the technology. We need some time to standardize the regulations. It is a process. So in the process, we don't want to support the people who are taking the disadvantage of the law. But at the same time, we have to encourage the people for new technology, new innovation and research. Otherwise, our strong action will stop all the initiative and all the new policies and new technologies. That's a very helpful observation. On the issue of, there is a lot of discussion, sir, about, the cost of logistics as a percentage of GDP and how that is high in India. It is said that it's about 13 to 14% in India compared with the global average of about 7 to 8%. Ashwini Vaishnav ji, rail minister who was here earlier today, he said that rail mein wo thoda kam hote hain, so one of the solutions is to shift more share to rail. You're the roads minister. Is that one solution? What are the various ways in which we can bring down the cost of logistics? देखिए, अभी आप देखो ये पोर्ट पर आप पहुंचे नहीं, वहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम पोर्ट पर है। पोर्ट पर? हाँ, जहाज नहीं लगता, कंटेनर नहीं जा रहे, कंटेनर का शॉर्टेज है। यूक्रेन वॉर के बाद रेट 3 गुना बढ़ गए। बहुत ही तकलीफें है, क्योंकि मैं शिपिंग मंत्री था, सब आते हैं मेरे पास। नाउ द प्रॉब्लम इज हम सब पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। हम 6 to 8 लेन, 8 to 12 लेन, 16 लेन के हाईवे बना रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी वो LNG को ट्रक ला रहा है। ये जो हमारे यहाँ गुजरात में हजीरा में LNG का ट्रक बन गया, अभी मैं उसको लॉन्च करने वाला हूँ। वो तो 12 पंप में 1400 किलोमीटर चलता है। LNG की बस आ जाएगी तो कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। डीजल पेट्रोल का यूज होने से कॉस्ट, इलेक्ट्रिक ट्रक में कॉस्ट कम हो जाएगी। तो रोड भी अच्छे बन रहे, ई हाईवे भी बन रहे, फ्यूल भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। मुझे लगता है हम लोग, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, कि हम साधारणतः एक 5 साल के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारी 16-18 कभी जाती है, हम लोग 10% तक आ जाएंगे। इतने रोड अच्छे बने। अभी आप दिल्ली मुंबई हाईवे का इनॉग्रेशन हो जाएगा दिसंबर जनवरी में, ये दिल्ली कटरा का हो जाएगा। वो हमने पंजाब में जलन अमृतसर से लेकर पूरा वो गुजरात के पोर्ट तक बड़ा रोड बना है, वो पूरा हो गया। उसका इनॉग्रेशन PM साहब से हम अभी 15 दिन महीने भर में कर रहे हैं। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग बन गया। तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने पैसेंजर कार को बताया कि मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में। अभी मैं देहरादून था ये चुनाव में, तो चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, तो मुझे भाषण में बता रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड। देहरादून में 10 फ्लाइट आती है रोज दिल्ली से। फिर मैं भाषण देने खड़ा हुआ, बोला चिंता मत कर, दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। तो बोला क्यों? अरे बोला देहरादून आने के लिए घर से एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा, वहां बैठना 1.25 घंटा, फिर वहां से जाने में 1.25 घंटा और घर जाने में 1 घंटा, गए 4.5 घंटे। मैं तो दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून पहुंचा दूंगा, तो घर चले जाएंगे।
फ्लाइट, अभी ये सच हुआ, मैं जब मंत्री था तो जेट एयरवेज की मुंबई से पुणे 8 फ्लाइट थी, जो यहाँ मुंबई करोगे उनको याद होगा। अभी बंद, जब से हाईवे बन गया मुंबई पुणे फ्लाइट नहीं है, कोई फ्लाइट रहेगी नहीं। तो अभी जयपुर की फ्लाइट बंद हो जाएगी, चंडीगढ़ की फ्लाइट बंद हो जाएगी, इवन श्रीनगर की भी फ्लाइट कम हो जाएगी, और आपका अमृतसर की फ्लाइट बंद हो जाएगी। ये एयरलाइन वाले आपके पास आके कहते हैं कि सर कृपा कीजिए? हाँ? अभी मैं आ रहा था तो अजय सिंह ही बैठा था अभी देखो वो उनके नए जो सेंटर खुलेंगे ना, देखो हिंदुस्तान में 3 चीजें पक्की है। ऑटोमोबाइल ग्रोथ में ग्रोथ ही होने वाला है, तुम कुछ भी लिखो कुछ भी कहो, हर बार व्हीकल बढ़ने वाले, पॉपुलेशन ग्रोथ पूरा चल रहा है, और एविएशन ट्रैफिक 22% है राइज। तुम कुछ भी कहो, दूसरे सेंटर खुल जाएंगे। लोग अभी आज मैं याद करता हूं कि कुछ दिनों के पहले जब मैं था तो विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो मैं AC 2 टायर तो छोड़ दो, सेकंड क्लास में वो टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई बड़ा पेपर लेता था, नहीं मिला बर्थ तो नीचे डाल देता था, सोता था, ट्रक में घूमते थे। अब मैं 3-4 साल में मुझे ट्रेन में घूमना ही याद नहीं है, सब फ्लाइट से जा रहे हैं, क्योंकि टिकट भी सस्ता है। तो धीरे धीरे एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें ये क्षेत्र में, अभी उसने कहा कि मैं सी प्लेन ला रहा हूँ रीजनल, एक तालाब से, यहाँ से दिल्ली से उड़ गए तो जयपुर के तालाब में उतर गए, जयपुर से उड़े तो गंगा में, प्रयागराज में उतर, वाराणसी में उतर जाएंगे। अब दिन दूर नहीं, मैंने सब रेगुलेशन कर दिया MPBS। मेरा सपना था कि लोग एयरपोर्ट पर उतरेंगे, यमुना में आएंगे, यहाँ से सी प्लेन में बैठकर उड़ेंगे, ताजमहल के पीछे 18 मिनट में उतर जाएंगे, 1 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वापस आएंगे, 18 मिनट में यमुना में आएंगे, और वहां से 30-35 मिनट में एयरपोर्ट जाएंगे। अब ये सपना है, पर मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि मैंने जितने सपने बताए वो सब पूरे हुए अभी तक कोई ऐसा सपना नहीं है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो आज उन्होंने कहा कि मैंने MPBS सी प्लेन में मैं जा रहा हूँ, तो वो सब वो रूट उन्होंने खरीद लिया है, तो अब ये होगा। एक बार MPBS सी प्लेन की बड़ी अच्छी बात है, मैं मंत्री था शिपिंग का, एविएशन वाले कानून ही नहीं करते थे, तो मैंने एक दिन वो मंत्री और सेक्रेटरी को कहा, देखो तुम जिसको MPBS सी प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूँ, क्योंकि ये प्लेन पानी में उतरता है और हवा में उड़ता है। मैं उसको फ्लाइंग बोट कहूँगा जो पानी में चलेगी और हवा में उड़ेगी। तो तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे 3 महीने में, तो मैं फ्लाइंग बोट का एक्ट बनाकर पार्लियामेंट में चला जाऊंगा, तुम रह जाओगे देखते हुए। तो उन्होंने तुरंत एक्ट बनाया। अब एवरीथिंग इज देयर, वो दिन दूर नहीं है कि आप यहाँ से वाराणसी डायरेक्ट जाओगे, गंगा के किनारे उतर जाओगे, गंगा के किनारे आपका MPBS सी प्लेन लग जाएगा, दूर नहीं है सर, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आई वांट टू गो बैक टू वन थिंग यू मेंशन। आपने कहा ट्रेन में अखबार लगाकर आप मतलब सो के ट्रैवल कर, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, रश रहता था जी। हमको आदत नहीं थी उस समय, तब कोई ये इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग नहीं था, हमारा भरोसा भी नहीं था, कहीं से भी निकलते कहीं भी जाते, तो फिर क्या करना, तो पेपर जो सस्ता मिलता था बड़ा, कोई नाम नहीं लेता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, वो जो सस्ता मिलता था वो पढ़ते थे, और फिर थोड़ी देर के बाद वो कॉरिडोर में डाल देते थे और सो जाते, चलते थे। ये अनरिजर्व्ड स्टेशन में, ये कब की बात है? मैं स्टूडेंट था तब, हम लोग, मैं घूमता था काम के लिए। देखो अभी बीजेपी को दिन अच्छे अभी आए हैं बराबर, बिल्कुल। जब वो 75 इमरजेंसी थी, उस समय मैं कॉलेज में था, तो घूमता था, तो काय की गाड़ी काय की स्कूटर, ऐसे ही घूमते थे। So from those difficulties which you faced in travel, did it ever play a role in you taking an interest in making travel and commuting and all of this easier for others? सर मैं जब मंत्री था तो मुझे एक समझने में, मुझे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनका एक सेंटेंस मुझे पढ़ने को मिला। तो जॉन कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं यंग था, मुंबई में मंत्री था, तो अटल जी मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। बोले तुम क्या शहर में रोड बनाओगे, गांव के नहीं बनाओगे? तो बोला अटल जी मेरे पास इसका मैंडेट नहीं है, मैं केवल स्टेट रोड का काम करता हूँ, तो इसके लिए योजना तैयार करो। तो ये जो आज सबसे फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये मैंने बनाई। मैं उस समय 34-35 साल का था।
नाबार्ड के जो मैंने वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, और तब मैंने उस योजना के रिपोर्ट के पहले पेज पर ये वाक्य लिखा था। उसमें नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, और मैं बात करूँ 2003-04 की, तब मैंने कहा था कि अगर ये गांव के रोड बनेंगे तो 1,10,000 करोड़ का जीडीपी बढ़ेगा। और आज 4.5 लाख गांवों को जोड़ा गया है। अटल जी ने जिस काम की शुरुआत की उनका सपना पूरा हुआ है, और पूरा रूरल एग्रीकल्चर इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड के कारण। तो मैं यही कहता हूँ कि रोड बनाने से, अभी देखो, अब कभी अच्छा होता कि बुरा होता मुझे नहीं समझता। मैं एक बार हवाई जहाज में जा रहा था विस्तारा में, एक कोट पहना हुआ आदमी मेरे पास आया, मेरे पैर छुए। मैं बोला ऐसे, वो भी बिजनेस क्लास में बैठा था। मैं बोला यार क्यों ऐसे कर रहे हो? सर जिंदगी बदल दी आपने। बोला मैंने क्या किया? बोले मेरी प्रॉपर्टी है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, सर दिवाला पिट चुका था, इंसिल्टी में अकाउंट गया। आपने जैसा बनाया रोड, पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, 2,500 करोड़ मैंने कमाए सर, आपके कारण मेरा जीवन बदल गया। अब मुझे मालूम नहीं, मेरे पास तो दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं, पहले मालूम होता तो मैं भी एक आधा लेता। पूरा द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में जो रियल इस्टेट बेची गई है उसकी कॉस्ट निकालो, वो कम से कम 1 लाख करोड़ की होगी। पूरा वैल्यू एडिशन हुआ। रोड बनाने से जो जमीन की कीमत 20 लाख रुपए एकड़ है वो 2 करोड़ रुपए एकड़ हो जाती है। नई इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आते हैं, लॉजिस्टिक पार्क आते हैं, और वहाँ स्मार्ट सिटी बनती है, स्मार्ट विलेज बनता है। तो रोड से प्रोग्रेस आता है, रोड इज फॉर द प्रोग्रेस। तो यही बात को समझते हुए रोड बने रहे, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है, और जो उन्होंने हमारे इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टारगेट रखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें सबसे बड़ा शेयर रोड का भी है कि हमें भी उतने लाख करोड़ के रोड बनाना है। और मैं जो पैसे बिल्कुल लोगों से अब लेने वाला हूँ, मैं अब लोगों से स्टॉक एक्सचेंज में जाकर एक एक प्रोजेक्ट पर पैसे लेकर गरीबों के पैसे से रोड बनाने वाला हूँ। मैं उनको रिटर्न देने वाला हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, लाइन लगा के लोग खड़े हैं, कोई 20,000 25,000, बैंक वाले चेयरमैन आपस में झगड़ा करते, मेरा पैसा लो मेरा पैसा लो। AAA रेटिंग है, और मेरा टोल का इनकम अब 40,000 करोड़ है। अप टू एंड ऑफ 24 इट विल 1,40,000 करोड़। तो मुझे कोई पैसे के लिए कोई मॉडल ऐसा है कि प्रॉब्लम नहीं है, और बजट 2 लाख करोड़ का है, तो अभी रोड बहुत बन सकते हैं। यू आर टचिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स इंडीड। मैं भी एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। हमारे कंपनी में भी एक लड़का है, अंशुमान नाम है उनका, वो पार्टनरशिप्स देखता है। तो एक दिन मैंने कहा शाम को वी आर ऑल लीविंग, तो मैंने कहा अंशुमान कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा मेरठ, और हमारे ऑफिस तो यहाँ सीपी में है। तो मैंने कहा मेरठ, सो ही ट्रैवल्स टू मेरठ एंड कम्स बैक ट्वाइस अ वीक। उन्होंने कहा हाँ, इट डजंट टेक दैट लॉन्ग, यहाँ से ऑफिस से 1.5 आवर्स इट टेक्स मी। सो मुझे नहीं पता। सो ही वाज लिविंग इन दिल्ली, ही कुड शिफ्ट बैक टू। आपको एक मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, पर आपको ज्यादा, ये जितने जर्नलिस्ट हैं और ये टीवी के जितने आपके हैं, ये सब यमुना पार रहते हैं। और ये मुझे बताया क्यों, क्योंकि ये मैं जब पार्लियामेंट में तो गेट पर सब एक दिन आए, बोले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोला क्यों? बोले हम वहाँ से पार्लियामेंट 1.5 घंटा आते थे, अब 15 से 20 मिनट में आ रहे हैं। तो नेचुरली रोड बनने से एकदम लाइफ बदल जाता है, पोल्यूशन कम हो गया है। तो निश्चित रूप से अभी मैं गाजियाबाद से लखनऊ का रोड बना रहा हूँ नया, और उसको कानपुर से लखनऊ हाईवे का काम शुरू हो गया, एक्सिस कंट्रोल। तो मैं 35 मिनट में कानपुर से लखनऊ पहुंचाऊंगा, तो एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं, कानपुर वाले वहां पहुंच जाए। सर इतने सड़कें तो मतलब रोड्स तो काफी वेरी इंप्रेसिव रोड्स आर बीइंग मेड, but it's also true that there is some distress in the sector. There are people who have bid for roads who are now not able to complete these roads. ये distress क्या काफी widespread है या contained है, या सरकार कुछ कर रहे है इसको? सर ये बीमारी नहीं, ऐसा नहीं है। पर मैंने जब मिनिस्ट्री का चार्ज लिया था, आपको याद होगा, इनको पता है, तब मेरे पास 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टोल प्रोजेक्ट थे। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये दिल्ली जयपुर, फिर ये तुम्हारा देहरादून वाला रोड, फिर ये बरेली वाला रोड, ये बहुत क्रॉनिक केसेस थी। और ये सब इसमें मैं रोज 12 बजे तक बैठता था, कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर्स, अधिकारियों को लेकर, और मैंने 40,000 करोड़ के काम टर्मिनेट कर दिया, और करीब 2,20,000 करोड़ के काम होंगे, हमने उसका सोल्यूशन निकाला।
सर आपको एक बात बताता हूँ, मेरे मिनिस्ट्री ने अभी तक 7 साल में हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, 3 लाख करोड़ के। और अभी ये प्रॉब्लम बहुत कम है। नहीं, ये आपने कैसे किया? मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको। अभी देखो क्या हुआ, 10% लैंड थी, प्रोजेक्ट अवार्ड हो गए पुराने 2014 के पहले की सरकार में। फिर उसके पास लैंड नहीं तो मशीनरी खड़ी है, इंटरेस्ट मीटर चालू है, बैंक अड़चन में आया, बैंक ने पैसा देना बंद किया, आपको नाम नहीं लेता, ये बड़े बड़े कंपनियां सब खत्म हो गई, बड़े बड़े लोग खत्म हो गए, एनसीएलटी में गए। तब मैंने उनको सोल्यूशन निकाले, प्रॉब्लम सॉल्व किए, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस, प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की, मैंने सब क्लियरेंसेस कराए, एक्विजिशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के सॉल्व किए, रेलवे ओवरब्रिज के किए, अतिक्रमण को हटाया, और फिर उसके कारण स्मूथ बना। अभी अब क्या किया, मैंने निर्णय किया कि 90% लैंड मिले बिना अवार्ड ही नहीं करना, तो अब प्रॉब्लम नहीं आता। अब रेलवे का पहले करते, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस में सब पहले तैयार करो फिर टेंडर करो, तो प्रॉब्लम कम हुई। फिर भी प्रॉब्लम्स है, तो मैंने अभी कहा कि भाई एक की शादी फेल हो गई, तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा पुनर्विवाह कर दो, दूसरा देखो कोई मिलता है क्या मार्केट में, तो मिल गए लोग, तो ये हो गया, उसका दूसरे के साथ लगा दिया। बहुत, मैं रोज यही काम करता हूँ, काफी लोग मिलते हैं। अब ये तो सामाजिक काम है ना, कि भाई एक डाइवर्स हो गया, दोनों का लाइफ खराब हो गया, तीसरे को देखो, दोनों की शादी करा दो, तो ये पुण्य का काम है, तो मैं करते रहता हूँ। I have 2 quick And questions. actually one thing, we are transparent, time bound, result oriented and corruption free. 50 लाख करोड़ के मैं 8 साल में काम कर चुका हूं, आपको एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा कि जो बोलेगा कि मेरे काम के लिए मुझे मंत्री जी के घर जाना पड़ा। तो हमने ये बात रखी, और क्वालिटी के बारे में पक्का, फिर मेरी गालियां भी खाते लोग, बड़े बड़े लोग खा चुके हैं, टाई और कोट पहने हुए बड़े लोगों को भी इतनी गालियां खाई है मैंने, तो मैं वो बताता नहीं, वो न्यूज़ बन जाएगी। तो मैं बोला दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। मैं अभी दिल्ली मुंबई हाईवे गया था, तो मैंने गाड़ी में बैठा, थर्मास में चाय था, मेरे पीएस को मैंने चाय लो, कप लो, बोला 160 किलोमीटर स्पीड कर, निकाला थर्मास, चाय पिया पूरा, मैंने बोला एक बूंद भी गिर गया तो दिखा दो तेरे को कैसे होता था। पूरा परफेक्ट था, ग्रेडियंट बराबर है कि नहीं है। स्पीड ब्रेकर के बारे में, ये हमारे ये जो बीच में एक्सपांशन जॉइंट्स होते हैं, बहुत मेरे कॉन्ट्रैक्टर गाले खा चुके हैं। अच्छा, मैं पब्लिकली भी डिपार्टमेंट को एक्सपोज कर देता हूँ, गलत है तुम्हारा करके, क्योंकि मैं बोला ये देश के एसेट्स है, जनता इसकी मालिक है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए। और हमारे रोड की कल टीवी पर आया, महाराष्ट्र के एक एमएलए ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार को मांग की कि ये मुंबई और महाराष्ट्र के रोड केवल एनएचआई के ही कॉन्ट्रैक्टर को क्वालिफाई करके दो तो रोड अच्छे होंगे, ऐसा उसने पत्र लिखकर कहा। वो एबीपी, और इसमें मैं रात को देख रहा था टीवी पर आया। ये क्रेडिबिलिटी रोड क्वालिटी की बनी है। एनएचआई को आप रिस्ट्रक्चर करने की कोई प्लान है आपका? ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, लगातार हमारा चालू रहता है। देखो, इट्स ए प्रोसेस, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। हम भी समय से, अनुभव से सीख रहे हैं। आपको याद होगा, मैं झोजिला टनल है, झोजिला टनल का 4 बार टेंडर निकला और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। ये दिल्ली का पीएचडी चैम्बर, इनके साथ मैं ये ओबेरा होटल में 2 दिन वर्कशॉप किए, वर्ल्ड के लोग बुलाए, मशीनरी बदलाई, टेक्नोलॉजी बदली। मैंने मेरे एक मुंबई पुणे हाईवे में टर्न धर्माधिकारी करके थे, काफ़ी एक्सपर्ट, उनको लाया, दुनिया भर के लोगों को लाया, क्वालिफिकेशन के नॉर्म बदले, मैंने खुद इंटरेस्ट लिया। और एक झोजिला टनल में, जो आशिया की सबसे लंबी टनल है, कारगिल के नीचे, -6 डिग्री और 8 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी पूरी हो गई, आप देखने के लिए जाइए, स्टेट ऑफ आर्ट है। उस एक टनल में हमने 5,000 करोड़ रुपए बचाए, 5,000 करोड़। ये अभी एक लास्ट में 7,000 करोड़ में बनी। हाँ, अंतिम में 7,000 करोड़ की खर्चा में बनी नहीं, उसका तो 5,500 करोड़ है, कुछ एडिशनल वर्क हम करने वाले हैं, पर उसमें 5,000 करोड़ बचे रिकॉर्ड पर। अभी आपको एक बात बताइए, माजुली आइलैंड है, ये सर्वानंद सोनोवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो उस समय आसाम के मुख्यमंत्री थे, चुनाव प्रचार के लिए मैं गया। वो बोले
हेलीकॉप्टर में मेरे को बोले, मैं बोला नहीं होता जी। बोले ये ब्रह्मपुत्रा पर ब्रिज बना, ब्रह्मपुत्रा में समुद्र है, तो मुझे बोले ब्रिज बनाओ माजुली आइलैंड के लिए। मैंने नहीं बोला। उसने मुझे इमोशनली बोला, देखो तुमने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, आप नहीं चाहते कि मैं चुनाव जीतूं, 1.5 लाख वोट है, मेरा क्या होगा। मैं बोला ये कैसा करूं, इतना बड़ा ब्रिज कैसे बनेगा। नहीं बोला आप बोल दो। बोला कैसे बोल दो। मैं गया थोड़ा, मैं भी उसको बेचारा बोल दिया। मैंने कहा 1000-1500 लगेगा, हो जाएगा। वापस आया डिपार्टमेंट ने कहा 6000 करोड़ लगेंगे ब्रिज बनाने के। फिर मैंने सोचा अब क्या करना, फिर बैठा मैं, फिर ये मलेशियन टेक्नोलॉजी लाई, फिर चेंजेस किए, टेंडर निकाला, 1 साल काम किया। 6000 करोड़ का ब्रिज यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने टेंडर लिया 680 करोड़ में, और अभी काम चालू हो गया। तो टेक्नोलॉजी के कारण काफी सेविंग हो सकता है। ये बॉर्डर एरियाज के बारे में क्विकली एक चीज पूछना था। अभी परिस्थिति ऐसा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी अराउंड बॉर्डर रोड्स। वी हैव नेबर्स हु आर वेरी गुड एट बिल्डिंग वेरी क्विकली इन द बॉर्डर। इसमें आपका स्पेशल अटेंशन जा रही है अभी? बिल्कुल जा रही है। ये जितनी हमारी बॉर्डर है, वो पूरे बॉर्डर के रोड हम चाइना ने बना लिए हैं, हमारे यहाँ नहीं थे, हमने सब बनाया। मैं केवल जम्मू कश्मीर में, ओनली जम्मू कश्मीर में 65,000 करोड़ की टनल बना रहा हूँ। पूरा कश्मीर बदल रहा है। आप कहीं भी जाइए, जम्मू से श्रीनगर रोड पर 6 टनल बना रहा हूँ, उसमें 4-5 तो हो गई पूरी। तो पूरी सभी बॉर्डर को, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, बांग्लादेश को हमने 6 जगह से जोड़ा है। बांग्लादेश हमारे एनिमी कंट्री में नहीं आता। और अभी बांग्लादेश का ट्रेड रिवर से और रोड से करके, मणिपुर से, वो जो मोरे करके जगह है जहाँ से म्यांमार 500 मीटर पर है, मैं गया था वहाँ, वो रोड पूरा बना रहे हम लोग, ताकि म्यांमार का ट्रेड डायरेक्ट ट्रक से उधर होगा। बांग्लादेश के साथ हम 6 जगह पर रोड बनाकर फेनी ब्रिज बनाया। भूटान के साथ, नेपाल के साथ हम रोड कनेक्टिविटी बना रहे अच्छी। तो अभी सब जगह पर हमने काफ़ी बॉर्डर रोड को प्रायोरिटी दी। कल नहीं, आज ही राजनाथ सिंह जी और मेरी बात हुई, और मैंने उनको कहा कि एक बार डिफेंस वालों के साथ बात करके कुछ रोड NHI के वो मैं बना रहा हूँ, बॉर्डर कुछ नहीं है, तो आप बैठकर एक बार उसके इंपॉर्टेंस रोड डिफेंस से लेकर आप मुझे बुलाइए, हम बैठकर उसका भी समाधान ढूंढेंगे। और इसमें पूरा पर अरुणाचल में मैं 1300 किलोमीटर का एक ट्रांस अरुणाचल हाईवे बना रहा हूँ। अब मैंने उनको कहा कि टेक्नोलॉजी बदलो, सॉइल स्टेबलाइज करो और बिटुमिन और व्हाइट टॉपिंग करो। वो बोला 20 करोड़ पर किलोमीटर, ना 2 करोड़ पर किलोमीटर बनाओ। तो मैं अरुणाचल में, आप कभी जाओगे, आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, मैं 1 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाओ, मणिपुर जाओ, त्रिपुरा जाओ, नागालैंड जाओ, सिक्किम जाओ, कहीं भी जाओ, आपको हर जगह काम दिखेगा। I will now move to the audience for a couple of questions. But before that, I wanted to ask you one thing very quickly, sir. This on the issue of buses, electric buses, जो 50,000 buses आप you want to put on the roads, क्या हम इसके लिए तैयार है? All the other infrastructure in terms of depots that are electrified, ये सब आ जाएगा तब तक? लोड, मतलब ग्रिड में जो लोड पड़नी है। आपके प्रश्न को थोड़ा समझाने, आप इलाबोरेट करेंगे? When we have, for instance, now we have given a tender for 5,000 buses. ये जो when these electric buses I'm talking about, so when these buses start coming flying in the city, जैसे दिल्ली में buses आ गए, तो उसको रात को डिपो में जाना होगा। ऐसा है जी, टेक्निकली ये पॉसिबल है। अभी आपको एक बात बताऊं, मैंने एक इलेक्ट्रिक बस CSR में 2 बसेस डोनेशन में ली है, और जो 60 साल के ऊपर है और दिव्यांग है, उनको मैं फुकट में, नागपुर से एक शेगांव करके जगह है गजानन महाराज का, तो मैं फुकट में लोगों को ले जाता हूँ, दिव्यांगों को, और इसको वो 3 महीने के लिए बुक है। वहाँ क्या किया कि शेगांव संस्थान ने भी चार्जिंग का स्टेशन डाल दिया, इधर बस चार्ज होती, उधर जाती, उधर चार्ज होती, इधर आती। अब हर जगह पर सुविधा हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला, ये चर्चा विद्वान लोगों में होती है, आमलेट पहले की अंडा पहले, और ये इसका होगा क्या, मिलेगा क्या, क्योंकि लिखने वाले और सोचने वालों के लिए बहुत, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट बड़ा होता है, पर ये प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको देखो जैसी नीड होती है, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक कार है। अब मुझे मालूम, मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो मुझे क्या मालूम, पहले बार वो आया, उसने चार्जर फिट किया,
उसने मेरे मीटर के बजाय कॉमन मीटर में लगा दिया, तो 1 साल तो बिजली का बिल ही नहीं आया मुझे। फिर मैंने बोला अरे ऐसा मत करो। तो अभी हर जगह पर चार्जिंग स्टेशन आएंगे, पार्लियामेंट नया बन रहा, वहाँ चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं। अब वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर एक्चुअली मैं आपसे चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इतनी बदल रही रोज, जैसे आपकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बदलती ना, रोज नई नहीं आ रही। और ऐसी है कि अभी ये पार्किंग में लगा दो चार्जिंग हो जाएगा। अभी पार्किंग प्लाजा बना रहा हूँ मैं, उसमें गाड़ी खड़ी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। आप आपके कार्ड से जितना चाहे वो पैसा पेमेंट कर दो। इट कैन पॉसिबल। आपसे मैं एक मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कंपनीज में यू नो व्हेन यू आर टेकिंग ऑन सम बिग प्रोजेक्ट्स, यू थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट विल नॉट वर्क, और वो यू नो वहाँ पे रुक जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर आपका एटीट्यूड और एक्सपीरियंस ऐसा है, आई थिंक यू स्पेशलाइज इन मूविंग अवे ऑब्स्टिकल्स। तो इसमें आपका व्हाट वुड बी योर एडवाइस इन गेटिंग थिंग्स डन? देखिए, मैं एक बात बहुत कहता हूँ, there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. प्रॉब्लम सब जगह पर है। घर में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम है, सर्विस में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? मैं 3 बातों के लिए सलाह दूंगा। पॉजिटिविटी, निगेटिविटी इज ए बिग प्रॉब्लम। कोई भी चीज बताओ, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, अभी मुंबई जाना है, फिर एक्सीडेंट होगा तुम्हारा तो क्या होगा, तुम मरोगे तो क्या होगा, पैर टूटेगा। अरे सर निगेटिव क्यों बोलते हो? पहली बात पॉजिटिविटी, दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी, तीसरी बात फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और चौथी बात कमिटमेंट फॉर द कंट्री एंड द सोसाइटी। मुझे लगता है एंड टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैं अक्सर आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे बाल ठाकरे जी ने एक बार एक एक्रिलिक के शीट पर लिखी हुई एक प्लेट दी थी, नितिन ने रख तेरे साथ, क्या है उसमें लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मैंने मेरे अभी लाया, मैं सबको देता हूँ। मुझे ये मत बताओ अड़चने क्या है, मैं इसके लिए बैठा नहीं हूँ। मुझे रिजल्ट बताओ कि ये क्यों नहीं होता और आप कब करोगे, आप करके लाओ। और मेरा अनुभव है कि छोटे छोटे लोग भी होते हैं, वो काम कर सकते हैं। आप देखो, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ इस बार मेरी मिनिस्ट्री, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने 5 रिकॉर्ड। मैं भी समय नहीं खराब करता आपका। अभी हमारे नागपुर मेट्रो में 2 रिकॉर्ड हो गए। अब हमारे लोगों में कैपेबिलिटी है, पर अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, और बुरे काम करने वालों को सजा होनी चाहिए। और अच्छे को अगर आप इनका, मैंने तालाब बनाए, वाटर कंजर्वेशन पर मैंने इतना काम किया है। मुझे 2 डिलीट मिली है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। मैं बहुत होशियार विद्यार्थी वगैरह नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, आई एम ए मीडियोकर स्टूडेंट, पर मुझे 2 डिलीट मिली है एग्रीकल्चर साइंस की। एक पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला और एक राहुरी जो शिरडी में है, दोनों बड़े रेप्यूटेड है। मैं बोला मुझे क्यों देते हो, तो मैं एग्रीकल्चर में काम, मैंने अभी तालाब बनाए फुकट में, हजारों तालाब बना रहा हूँ। आप बोलोगे कैसे? मैंने क्या किया, रोड में एग्रीगेट लगता है, मैं तालाब को खोदता हूँ, वो मिट्टी इधर लाता हूँ, और नदी नालों को खोदता हूँ, वो मिट्टी रोड में डालता हूँ, तो वाटर कंजर्वेशन बढ़ता है। मैंने कह दिया देखो, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी। 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, मैंने लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई। सोशो इकोनॉमिक बदल हो गया। आप अकोला जाओ एक बार और देख के आओ, लोगों ने, जो लोग आत्महत्या कर रहे थे उनकी परिस्थिति बदल गई। फुकट में हुआ, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। तो मैं आम के आम गुटले के दाम वाले, ऐसी बहुत सी फिलोसफी है। जब भी प्लास्टिक डाल दो, तो मैं महिला बचत गट जो होती है उनको को प्लास्टिक इकट्ठा करो, 15 रुपए किलो से खरीद लो, और वह अपने बिटुमेन में डालो, तो स्वच्छ भारत हो जाएगा। अभी मैंने परसों प्रधानमंत्री को भी सुझाया है कि जितना ये गंदा पानी होता है दिल्ली का, यमुना का, इधर उधर का आपके यहाँ आता ना, उसी पानी को, अभी आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, आप मथुरा में जाओ, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, मथुरा का 90 mld स्लज गंदा पानी, उसको साफ करके वो इंडियन ऑयल ले रहा है। और मैंने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट निकाला, वाटर रिसोर्स मंत्री था मैं तब। वो 40% मैंने दिया और 60% उसने लाया। कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। उसने 60% अपनी इन्वेस्टमेंट की, 40% मैंने दिया, और 90% स्लज से जो पानी निकलता है वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी के लिए खरीदती है, और 20 करोड़ साल की उसको देते हैं। मैं अपने शहर में टॉयलेट का पानी, गंदा पानी साफ करके बेचता हूँ 7 साल से, महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए।
आप पता करो, मुझे 325 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है पर ईयर टॉयलेट का पानी बेच। मैं बोला वही पानी अच्छा करो, रूफटॉप में सोलर लगाओ, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो, रोड पे लगा दो गैस स्टेशन और भरना शुरू कर दो, 70 रुपए किलो से सबका फायदा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 0 क्योंकि पानी फुकट में मिला, सोलर ऊपर से पावर है वही जाएगी। तो टेक्नोलॉजी के साथ और थोड़ा सा इनिशिएटिव के साथ काफ़ी चीज़ें बदल सकती है। मैं अभी लिस्ट बना रहा था क्योंकि आपने इतनी जगह जाने के लिए बोला है, जो जिला, मथुरा, अकोला, हर जगह जाएंगे। वी विल रिपोर्ट इट ऑल्सो। अभी आपको एक बात बताऊं, मैं वैसे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता, मेरा स्वभाव भी नहीं है। मैं बोला आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जितने वजन की चीज़ पानी में डालो उसका वजन जितना होगा उतना ऊपर आएगा, होगा तो होगा, नहीं तो ऊपर। मैं दूसरी बात कहता हूँ, एक मुझे कभी कभी लगता है कि जो अच्छे इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट नहीं मिलता। आप बहुत सेंसिटिव पत्रकार हैं, ये मथुरा का अगर आप अच्छी तरह आपके ग्रुप में छपवाओगे तो पूरे देश में इंस्पिरेशन मिलेगा और पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को एक नई दिशा मिल जाएगी। एक्चुअली सर, इसके बारे में मैं भी एक बात बताना चाहूँगा कि इनफैक्ट वी आर वेरी वेरी कीन। ये होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम, तेलंगाना में दे ब्रॉट इन अ वेरी गुड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। नाउ वो एक्सपीरियंस बाकी लोगों को, सो हम एक्चुअली एक फोरम खड़ी करने जा रहे हैं, पॉलिसी फोरम करके, ताकि ऐसे इनिशिएटिव्स जो है जो बाकी लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका सेलिब्रेशन हो जाए, उसका शेयरिंग हो जाए। सो वी विल बी कमिंग बैक टू यू वेरी सून विद अ फॉर्मल form of that program, and I hope that you will give us all support. Let's take a couple of questions from the audience. Can we please have some mics ready? If anybody would like to ask a question, please raise your hands. When the mics come to you, please make sure you identify yourself and please ask a question. The gentleman here, please. Sir, good evening, sir. Myself, Jagdish from Orient Belt Tiles. Sir, really I'm very happy the last 1.5 hours, whatever the information you gave it to us, it was really informative and I had many information. I have one request, sir. In Delhi, I am from South, but I am here in last more than 12 years. Since 7-8 years, I am trying to, make a complaint regarding the tea time. In Delhi, most of more than 40% of the street lights, it's on the daytime. You were talking about the energy saving, many things. Really, I'm very happy. But this is the right forum to, दिल्ली में 40% स्ट्रीट लाइट्स ऑन रहता है दिन में। आज भी मैंने एयरपोर्ट से आया सर, पूरा रोड पे दोनों साइड पे लाइट था। मैं काफी कंप्लेन लिख चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में। मैं पर्सनली इंटरेस्ट लेता हूँ, पता नहीं मेरे आंखों दिन में किधर भी लाइट चलता तो अपने आप दिख जाता है। क्यों मेरे घर पे भी मैं सारे लाइट बंद करता हूँ, सही से घर पे भी बोलता हूँ, बट लेकिन ये इसका कोई आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा। बहुत सही पर गलत व्यक्ति को है, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। पर ये एलजी और कारपोरेशन के कमिश्नर, मेयर को और स्टेट गवर्नमेंट को जरूर बताइए। आप आपके जहाँ ध्यान में आएगी, मुझे भी एक कॉपी भेज दो, मैं उनके पास आपकी बात पहुँचाऊंगा। ये नेशनल इंटरेस्ट में जरूर करना चाहिए। Hello sir, I am Rohit from Jet Soft Point. Road safety is the major concern and you are working great on road safety. Majority of accidents happen on highways and lots of injuries are happen on highways. Why we don't take a baby step, small baby step using AI and IoT, like railway has implemented cover system to avoid collision on highway, because it will take lots of budget to implement on each vehicles. What about this collision avoidance system implementation on highways? ये केवल कोलिजन कारण नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बस की बस खाई में गिर जाती है। तो एक पीयूष तिवारी करके एक सेव इंडिया से इसका एनजीओ है, बहुत अच्छा सुंदर काम करता है। अभी ये उत्तराखंड में हुआ तो मैंने उनको स्टडी करने के लिए भेजा, उसने 40 नेगेटिव पॉइंट निकाले थे जो बस गिर गई थी। तो पहली बात तो ऐसी है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके बहुत से रीजनिंग है। हम लोग उसको सुधार करके उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपकी बात सही है कि हमारे देश में 55 लाख किलोमीटर रोड लेंथ है, उसमें से
92,000 मैंने जब चार्ज लिया तो 92,000 केवल नेशनल हाईवे था, 2%, और देश का 40% ट्रैफिक राष्ट्रीय महामार्ग पर था। अभी मैंने 1,47,000 किलोमीटर किया है, तो हमारे देश के 4% हाईवे पर हमारा 60% 65% ट्रैफिक है। तो मेजॉरिटी एक्सीडेंट जो होते हैं वो नेशनल हाईवे पे होती है। अब हमने वो जो भारत ने इसका नया जो ये किया है कि हम लोग कार की जो ये है उसको रेटिंग कर रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्ड है कार का वही स्टैंडर्ड का हो जाए। तो वो अभी मैंने फाइल पे साइन कर दी है ताकि क्वालिटी हो रहा है। मैं क्रैश बैरियर की मैंने टेस्ट पूना में ARI में देखी, वो गाड़ी स्पीड से आई तो लोगों नकली लोग बनाते बैठते, वो सब देखा। तो अब हमने हमारे इंजीनियरिंग में खूब सुधार किया, एयर बैग्स के लिए किया है, फिर उसके बाद क्रैश बैरियर के बारे में कर रहे हैं। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सुधार के साथ रोड इंजीनियरिंग में गलतियाँ थी, अभी भी है। अभी हमने ADB और वर्ल्ड बैंक से मदद 7,000 करोड़ की लेकर 7,000 करोड़ हमने डालकर 14,000 करोड़ की योजना बनाकर वो अभी कैबिनेट के अप्रूवल के लिए वो काम कर रहे हैं। पर जितना करने के बाद भी, जो सब होने के बाद अभी भी डाटा जो है वो उतना अच्छा कम नहीं हुआ है। पर मुझे लगता है कि ये सभी लोग अगर एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मीडिया, जनता और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सोशल वर्कर्स, NGOs, यूनिवर्सिटीज़, अभी मुझे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सब फ्री ऑफ चार्ज काम करते हैं रोड सेफ्टी के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि वो कहते हैं कि हम इसमें कैंपेन में आएंगे। तो आप सब मिलकर हमको बहुत कोशिश करनी चाहिए। वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो आपने कहा है इसमें हर चीज़ को कॉस्ट लगती है। अभी ये इंटेल नाम की कंपनी है जो है, वो उसके MD कौन है, हमारी बहुत अच्छी मेरे आती है, हाँ, निवृत्ति राय, उन्होंने ये किया है ये, पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, हमारा देश बेयर नहीं कर सकता। हमारी बस की कॉस्ट जो है उसमें भी हमको देखना पड़ता है कि टिकट रेट ना बढ़े। उसके लिए जब टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना तो कॉस्ट फैक्टर भी आता है। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, पर सस्ते में मैक्सिमम कैसे हो सकता है, आपके भाव से वो कोशिश हम कर रहे हैं। Last question from the audience. Good evening, sir. I have similar points on road safety, and similarly, as I also feel that there's a lot of accidents that take place on expressways and highways, and I have got suggestion also as to how it can be done. Also, my observation is that a lot of accidents on the expressway highway takes place for one reason is slow vehicles. Vehicles which are just driving at very low speeds, they come on the road. So I think that then another is sir, lane discipline nahi par. Sir, definitely. Sir, another is overloaded vehicles. If you see, so many cases have taken place recently where the cars have met with accidents with trucks and all, and they said there were 10 people in the car, 8 people in the car. I mean, obviously then, the braking, everything gets affected. And another is, which is also very important, is poor vehicle condition or poor condition of tires. Sir, I've got the solution. It's very simple solution, because most of these roads have tolls, right? When the vehicle goes from the toll, there can be cameras there with, simple technology can be developed easily, which will automatically detect that there's an overloaded vehicle, that the vehicle condition, the tires are not okay. The cameras can be put for, checking the tires, and, you can just, straight away cut a challan. Like you're doing a challan for speeding by cameras has been started on so many roads. So even this can be, this is not, I know it's a technology solution, there's some cost, but I don't think the cost is so high. सर, हमारे सब टोल पर कैमरे लगे हैं, वेइंग ब्रिज लगे हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, पर आपको बताता हूँ। मैंने 10 टन के ट्रक को 12.5 टन अनुमति दे दी, 15 टन को 20 टन दे दी। इसका कारण सर, समय समय पर रोक के जो कुछ होता था उसको बंद करने के लिए। अब वो 12.5 टन का किया तो वो 15 टन लेके जा रहा है। प्रॉब्लम है कि ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, और उसमें जितने कठोर नियम करो उतना करप्शन बढ़ता है, तकलीफें बढ़ती है। वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट कि लोगों को भी तकलीफ ना हो। ये है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन धीरे धीरे डबल एक्सल
ज़्यादा कैपेसिटी के ट्रक का टोल हमने कम करने का सोच रहे हैं, और जो सिंगल एक्सल वाले उसका टोल ज़्यादा होगा। तो डबल एक्सल के जब आएंगे तो नेचुरली टेक्नोलॉजी बदली अभी, और अच्छे अच्छे नए नए कंपनियों के आए। अभी ट्रक पर वो प्लास्टिक का कवर करना, पूरे यूरोपियन कंट्री में आप कहीं भी जाओ कवर होता है, हमारा नहीं होता। बस का कोड, अभी बस का कोड जो था मैंने तय किया, फिर ये जो पंजाब हरियाणा में हथौड़ा लेकर बस की बॉडी बनाने वाले हम बेकार हो गए, मैं उनको एक्सटेंशन देते गया। अब बसेस के इतने एक्सीडेंट हो गए, मैंने कहा नथिंग डूइंग, वो मतलब आप फैक्ट्री डालो, नहीं तो आप यूरोपियन कोड जो है वो अभी मैंने ऑर्डर निकाला कि अब क्वालिटी यही होना। देयर इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अगर कोई स्ट्रिक्ट करे तो गरीब लोग बोलते हैं मेरा रोजगार चला जाएगा। तो वी इन ए वेलफेयर गवर्नमेंट, हमें सब प्रकार के लोगों को समझाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ये लिमिटेशन है, फिर भी आपकी भावना जो है उसके तरफ हम धीरे धीरे उसी के तरफ जा रहे हैं। Gadkari ji, I cannot thank you enough. You came here, you spent a lot of time, you really engaged with all our questions. On behalf of Mint and everyone here, thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. time. Namaskar. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Nitin Gadkari ji. Thank you. Well, what an inspiring session.